All right, viewers, this is the big win which the Aam Aadmi Party has scripted in Punjab. It's historic in every sense of the word, with a sweeping mandate right now poised at 91 out of 117. All the big whips, which my colleague Harmeet just called the feudal lords of Punjab, have all lost as we speak. Sidhu's seat from Amrinder East has just been declared lost. He's accepted, conceded defeat. Amrinder Singh, Captain Amrinder Singh, Patiala, lost, accepted, conceded defeat. The Badals, all 5 family members, 4 of them right now have lost their seat. The big takeaways that we're getting in as the results come through of 5 states, BJP's super smash in 4 states. 4 states, BJP has won the state of Manipur, Uttarakhand, Uttar Pradesh, known to be the bellwether for what is to come in 2024, the general elections, and the state of Goa is in BJP's bag. The Congress obliteration across all 5 states. Complete annihilation if we look at all 5 states. Congress nowhere to be seen. Aam Aadmi Party invading, decimating the Congress. This is as historic as it gets in terms of victory in Punjab. I'm going to bring in my colleague Harmeet to get a larger understanding. Has it ever really happened, Harmeet, that 91 plus sweep for a party which has just got one election earlier? No, never. It hasn't happened ever before. But at the same time, I would like to say here that if you see the mood of Punjab today, the mood isn't that euphoric. It's a mood of placing a new party, Aam Aadmi Party, new in the sense that it's for the first time it has got power in Punjab, putting Aam Aadmi Party to a trial by fire. So it's for Aam Aadmi Party, it's now perform or perish. So this is going to be a huge challenge for Kejriwal. And Bhagwant Mann, I think, has to, within the AAM framework, of course, in Punjab, has to come out of the shadow of Arvind Kejriwal. If he doesn't, then this insider-outsider debate might spark again and put Aam Aadmi Party in great political trouble. Remember, I think there is still remnants of Congress within the assembly, new assembly, and you still have 4 or 5 Akalis also. So that is very important. Well, you're right, there is trial by fire. It's the acid test for the Aam Aadmi Party. In Delhi, many a times the Aam Aadmi Party is blamed the centre, says, because of the centre, yahan pe kaam nahi ho raha. Now you have it, you have a full state in your hand, and you'll have to make it count. The state of Punjab has given you their full faith, their full mandate. It can't get bigger than this when support is concerned. It's repeat of 2015 for Arvind Kejriwal, or rather even 2017, then what had happened right here in Delhi. And he scripted the same victory in Punjab. It's propelled him from just a government in Delhi to now on the national stage. Where he goes from here, Gujarat, Himachal, well, we'll only know in time to come. But I want to cut across to Sangrur. My colleague Kamaljeet Sandhu, who's been doing the Bhangra there, is joining us live. Kamal, a very subdued... All right, okay, we're going to go. But the man of the moment is Arvind Kejriwal. Let's listen in. Please. पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। पंजाब वालियों तुसी कमाल कर दिता। We all love you, Punjab. आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है।
भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने ये सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है। हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे। जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी मां बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं, जब आप देखते हो कि किस तरह से ये नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ।
आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन जोत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोगों को, सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी हैं अभी तक, अभी नतीजे और आ रहे हैं। इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे। इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी। केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या है, आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना। हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है। हमें सेवा की राजनीति करनी है। कहीं कोई बीमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो। हमें सेवा की राजनीति करनी है। मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उनका आशीर्वाद लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। While speaking to his cadre, speaking to
the people of Punjab that gave his party such a huge mandate, and also pretty much speaking to the country, because he's clearly stating his national ambitions, where you just heard him, that now it's Aam Aadmi Party looking at India per se, and that Indians have to get together. And he gave the call to the youth, to women in particular, to Kisans in particular, asking them to join the Aam Aadmi Party. They've emerged as vote banks in various elections, and this time around, Arvind Kejriwal speaking at the Delhi headquarters to his cadre, which have gathered there for a very long time, waiting for him. But this is not just Arvind Kejriwal talking to Delhi. This is Arvind Kejriwal making his national ambitions very clear. This is a speech for India. The Aam Aadmi Party, clearly now a national party, making inroads with the first full state of Punjab. Earlier on, a very somber, we've seen him very combative when he's been on the campaign trail, but Bhagwant Mann, very somber. This was his victory speech in Sangrur. Listen to him. ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਵਾਰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। All right, there you heard that's Bhagwant Mann there making his victory speech. I want to quickly pull in my colleague Harmeet, who's joining us for more. You know, Harmeet, there was one thing that you constantly spoke about. You spoke about, the Dalit factor. You had the first time a Dalit chief minister in the face of Charanjit Singh Channi, who fought not from one but two seats where the Dalit population was quite dominant. And it was perceived by many that the Dalit vote is going to go towards the Congress. The Congress is going to reap that benefit of having Channi as the chief minister. But that didn't quite work. We'll analyze the post-result data closely when it's available, but my sense tells me that perhaps it's the appointment of Charanjit Singh Channi backfired in Punjab for the Congress party, in the sense that it didn't help consolidate Dalit vote, which in any case wasn't ever monolithic in Punjab. But on the contrary, what happened was that I think it's my guess that Jat vote consolidated against Channi, and it consolidated hugely, especially in the Malwa belt. So the appointment of Charanjit Singh Channi, I think, backfired for the Congress party here. All right, so the appointment of Charanjit Singh Channi backfired. What about, that's so much talk. And, that's usually an argument which one had with many, that if there is an organic wave, then transfer of votes, manipulations don't really quite work. And a lot was made of the Deras announcing that, go with Congress. That didn't quite work on ground. Absolutely right. When you have a wave, then nothing else works. And when we talk about Deras, I think it's a misconception and it's a false narrative that some Baba in Dera issues some sort of an edict, and that edict is followed blindly by his followers. Deras don't function that way in the first place. All Deras have their own management committees, the major ones. And within those management committees, you have political wings of those Deras, which spread their backs, all across. And it's not that, some Baba will say, go and vote for that party, and people will, and his followers or devotees or whatsoever, they'll go and do it blindly. Not so, certainly not so, when there is a complete disenchantment with the existing political establishment and a craving for change. Well, we're giving the seat share there. That's Majha. This was where the Aam Aadmi Party, even, before polling,
polling had happened, had said this is what is going to spring a surprise. This was where they were wiped out in 2017, and look at those results there. 15 seats have gone to the Aam Aadmi Party till now. This is where they were hoping to consolidate. Doaba is still an area which they haven't really made much gains, but they were hoping that Majha and Malwa will compensate for Doaba. And how has it compensated? It is on your television screen, viewers, with 91 seats going to Aam Aadmi Party from 117. The Congress now being reduced to a precious 19. That's it, with Shiromani Akali Dal at just 4. I want to take you through with some of the key candidates right now. The biggest names, the movers and shakers when it came down to Punjab politics, completely washed away in what has been an Aam Aadmi Party tsunami. Right from Sukhbir Badal lost his seat from Jalalabad. Sindhu has lost his seat from Amrinder East. From Lambi, Prakash Singh Badal has lost. Captain Amrinder Singh has lost his seat in Patiala. So this is what it looks like, and these are numbers that we're getting to you from Malwa. Malwa is the lion's share. If I'm incorrect, if I'm correct, 69 seats. 69 seats from Malwa, yes. 69 seats from Malwa, and this has been completely swept by the Aam Aadmi Party. The figure of 66 out of 69 is astounding. The Shiromani Akali Dal with just 1 and the Congress with just 2. This is where they had done well the last time around in 2017 with 17 seats out of 20, which was their lion's share they had got from the Malwa region. And this time they've taken it through. 66 out of 69 have gone to the Aam Aadmi Party. This is what a wave, or rather an Aam Aadmi Party tsunami, looks like. Harmeet, I'm going to ask you one quick question before I let you go. From now, what? Because like you said, it's pressure. It's under fire where the Aam Aadmi Party is concerned. It's an acid test of sorts. They've made many promises. They have to deliver from the word go. They have to come and start batting and throwing it, hitting it out of the park immediately. True. Because they are accountable. But having said that, for someone who's been following Punjab politics, what does it augur? We are giving the key candidates there. Bhagwant Mann has won his seat from Dhuri, and by a margin, if I'm not wrong, over 50,000 seats. But, as we go through the key candidates, Harmeet, take us through what changes in terms of politics for the state of Punjab. Aam Aadmi Party, a new player, but sweeping Punjab. What happens to a regional party like Shiromani Akali Dal? What happens to the lot of the Congress? And what happens to Captain? Because this new Lok Congress is done, decimated. Oh, of course, Captain's Party is gone. Captain Party was there, I think, just for this election season. But yes, I think the Shiromani Akali Dal, which I said has completed 100 years, has to overhaul itself, perhaps. And it just can't be a party of one family. The party leadership, the party lawmakers, whosoever there are in national parliament, they have to, sit together and brainstorm what to do next. Otherwise, it's an end of Shiromani Akali Dal and an end of a regional political group of Punjab. And Shiromani Akali Dal, Preeti, is not just a political party. I think it's also a strategic asset in Punjab politics. You have to have a regional party which acts as a bridge between different communities. Now that's gone. But thankfully, in these elections, polarization didn't work. In these elections, caste politics didn't work. People spoke about bread and butter issues. People spoke about livelihoods. And it was an election between the haves and the have-nots. Now, going ahead, for Aam Aadmi Party, for Bhagwant Mann, I think the first step is to fix the agrarian economy. And come out of the shadow of Arvind Kejriwal. Absolutely, he has to come out of the shadow of Arvind Kejriwal. And if the perception, sinks in that, no, he is still controlled by Arvind Kejriwal in Delhi, then, like it or not, it will be a new round of trouble for a new party in power. All right, stay on with me. Let's cut across right now. Arvind Kejriwal pretty much declaring his national ambitions. Well, he's never been shy of that, but this time doing it at the back of an emphatic win in the state of Punjab. Listen it. अब तो मैंने लिख के भी दे दिया। क्या लिख के दिया है आपने? चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं। तो हमें भी लिख के दे दीजिए। नहीं, एक बार लिख दिया, चलो। और लहर अगर आ रही है तो लो, लिखो। कागज दीजिए, कोई है कागज वहाँ पर? कागज दे दो। और अगर लहर आ रही है तो ये भी लिख के दे दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं। नहीं, सीटें कितनी की निमित्त बात ये करो, एक और लिख के दूंगा मैं। चलो जरूर। नहीं, वो भी मैं लिख के दे रहा हूँ। सुपर सीएम। नहीं, लिख के दे दो। क्या लिख रहा है सर? साथ में बोलते जाओ।
चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? सीटों से अच्छा, एक और चीज है, कल चन्नी साहब ने कहा था कि भगवंत मान जी धुरी से कितने वोटों से आ रहे हैं? 20,000 कह रहे थे। आज मैं अभी धुरी होके आ रहा हूँ, धुरी से सीधा आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दे रहे हैं। All right, so this wasn't his declaration of national ambitions. That just happened about 1 hour ago, or about half an hour ago, where he spoke in Delhi at the Aam Aadmi Party headquarters. This is what he had told us way back before polling, and I quite have that letter, or the note that he had written at that point of time, and practically save one. Actually, nearly all three are coming true, which is Channi will lose from both seats, Bhagwant Mann will win from a margin of 51,000, and the Badal Parivar की 5 सीटें हारेंगे, 4 तो अभी तक हार रहे हैं, is what seems to be the trend right now. A quick break, we are back with the very latest. Do stay with us, our rolling coverage. 5 states. Counting has taken place, 4 of them swept by the BJP in their pocket. The Aam Aadmi Party, AAP tsunami in Punjab as well. A quick break, stay with us. Our coverage continues.